डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और उस कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखेंगे. ये कंसेप्ट हम सेपरेटली पढ़ सकते थे, बट इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल. सो टुडेज टॉपिक इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, a numerical based on coefficient of insensitiveness. अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया है कि व्हाट इज दैट कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस. सो फॉर दैट आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. A Porter governor has equal arms 200 mm long pivoted on the axis of rotation. Porter governor has equal arms 200 mm long pivoted on the axis of rotation. The mass of each ball is 3 kg. तो mass दिया हुआ है 3 kg. आर्म की लेंथ दी है दैट इज 200 mm एंड द मास ऑफ द स्लीव इज 15 kg. मास दिया हुआ है 15 kg. ठीक है. Now the ball path is 120 mm when the governor begins to lift and 160 mm at the maximum speed. Determine the range of speed. That is okay. हमें रेंज ऑफ स्पीड फाइंड आउट करना है. सारे पैरामीटर्स अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा उसके साथ. Again, one more thing they asked, if the friction at the sleeve is equivalent to a force of 10 Newton, find the coefficient of insensitiveness. Friction दिया हुआ है और पूछा गया है coefficient of insensitiveness. So the given data, and for that given data I have initially drawn that diagram और उसके साथ अपन लिखते हुए चले. ठीक है. और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पोजीशन के लिए. सो फॉर दैट मिनिमम पोजीशन यहां से ले लेता हूं मैं. दैट इज द पोजीशन ऑफ बॉल एंड दैट इज द पोजीशन ऑफ एक्सिस, गवर्नर एक्सिस. ओके, वी गो फॉर दैट पॉइंट एंड दैट इज टच्ड विथ दैट. ओके, सो दैट पॉइंट इज डी, that point is P, that angle is alpha, that angle is beta. यहां से mg downward, that point is capital B. ठीक है. and that distance is 120 mm given in the problem. That point is G, that is h1 क्योंकि minimum distance ले रहा हूं, and that arm length is 200 mm. This is given in the problem. Then both arms are equal, that is 200 mm. And this is the condition. और यहां पर आपको स्लीव का मास भी दिया हुआ. तो स्लीव का मास इज गिवन. देन यहां पर लगेगा आपका कैपिटल mg डिवाइड बाय 2. ठीक है. और ये कौन सा कंडीशन है? दिस कंडीशन इज मिनिमम पोजीशन. नाउ arm length are equal 120 mm. This h1 alpha beta mg is given, small m is given, capital M is given. अब मैं बात करता हूं मैक्सिमम की. so for that maximum we go like that. This is the governor axis, this is the position of ball, this point is P. actually ये इसी के सिमिलर होना चाहिए था, थोड़ा नीचे आ गया. and that point is D. That distance is increases to 160 mm, इसलिए वो point थोड़ा नीचे आ गया. and that is 200 mm. this is also 200 mm. this angle is alpha, this angle is beta. Here that point is B, here that is mg, small mg, here capital mg divided by 2, and that is also 200 mm. so these are the condition, and that height is h2. ठीक है. एंड दैट पोर्शन इज मैक्सिमम पोजीशन. ये पोजीशन कौन सी हो गई? मैक्सिमम पोजीशन. सो गिवन डेटा में दैट BP equals to BD is given 200 mm, 0.2 meter, and mass small m is given 3 kg, capital M R1 is given 120 mm, R2 is given 160 mm, capital M is given, that is 15 kg, and one more parameter is given, that is friction force. So friction force is given 10 Newton. So these are the given data,
and I have drawn that minimum and maximum position. Now we are going to solve the particular प्रॉब्लम. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने कर लिए. हमारा मेन पर्पस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोफिशिएंट ऑफ इंसेंसिटिवनेस निकालना है, तो ये हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे. सो H1 is given by कैसे दोगे H1? अंडर रूट बीपी स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर. अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो h स्क्वायर इक्वल्स टू बीपी स्क्वायर प्लस बीजी स्क्वायर. ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ दिस, सो H1 इज गिवन बाय अंडर रूट 200 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर. व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस, तो H1 कम्स आउट टू बी 160 mm और मीटर में करेंगे तो 0.16. एंड हियर H2 कितना हो जाएगा? दैट अंडर रूट 200 square minus 160 square. So it comes out to be 120 m. Very easy. Now n1 square कितना हो जाएगा? It is given by m plus capital M divided by small m if friction is not considered into 895 divided by H1. So when we are going to put the value of किसकी? मास की, that is 3 plus 15 divide 3 into 895 divide H1. इसको मीटर में रख देते हैं 0.16. ठीक है, सो N1 comes out to be, यहां से इसका स्क्वायर रूट लेके निकालेंगे तो 183.2 rp. सिमिलरली N2 निकाल लोगे आप. सो N2 स्क्वायर इज गिवन बाय again small m plus capital M divided by small m into 895 divided by H2. So ये हो गया 3 plus 15 divide 3 into 895. H2 कितना है अपना? That is 0.12. So here N2 comes out to be, जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, that is 211.5 rp. और रेंज ऑफ स्पीड मुझे निकालनी थी फर्स्ट पोजीशन में. रेंज ऑफ स्पीड तो कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दैट इज N2 माइनस N1. N2 इज 211.5 माइनस N1 इज 183.2. सो दैट कम्स आउट टू बी 28.3 rpm is the answer of first question, that is range of speed. Now the important thing, coefficient of insensitiveness. Coefficient of insensitiveness. ठीक है, and it is given by, the formula for coefficient of insensitiveness is n double dash minus n dash divide n. The formula for coefficient of insensitiveness, जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो it comes out to be n double dash minus n dash upon में n. coefficient of insensitiveness का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज, इंसेंसिटिवनेस हमें पता ही था, सेंसिटिवनेस हम लोगों ने देख लिया, उसको किसी के रिस्पेक्ट में, तो सो n के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं. n डबल डैश माइनस n डैश अपॉन में n, एंड इट इज ऑल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला f डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M टाइम्स ऑफ g. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही फ्लक्चुएशन इन स्पीड आया, मतलब फ्रिक्शन आने के बाद ही मैंने बात की किसकी? कोफिशिएंट ऑफ इंसेंसिटिवनेस की. ठीक है, तो जब कोफिशिएंट ऑफ इंसेंसिटिवनेस की मैं बात कर रहा हूं तो F दैट इज 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 3 प्लस 15 into 9.81. So it comes out to be 0.0566, और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 5.66%, and that represents your coefficient of insensitiveness. So this is all about the numerical based on coefficient of insensitiveness. Thank you.